Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back after a very long this break. In the last lecture, we have studied in very much in detail about the stress transformation, and then we derived the stress transformation equation as well. And inshallah, in today's this part, we will be solving a problem, and then I will leave it on you people to practice as many problems as you can. And then before finishing this subject, there's one minor topic of Mohr circle, inshallah, that we'll be covering in the next lecture. And then in the last lecture of this subject, we will be solving another example on the Mohr circle. So today's your expectation should be that there will be 3 lectures. The first lecture would be on the solved example on the equation of the stress transformation. And then inshallah we'll be trying to understand the Mohr circle. I'll try to explain it for you people. I hope that you will find it interesting as well. And then in the end, another problem that would be based on the Mohr circle. So because there has been a very long break, so I've just included a slide on the summary of the stress transformation procedure. We have derived the stress transformation equation, and I hope you people have had enough time to practice and to watch these lectures, and you have understood all those concepts of the stress transformation in detail. So as far as the summary of this stress transformation procedure is concerned, the first thing you have to do is you have to identify the given stress component. Whatever the state of the stress is given to you, you have to identify the stress component within that state of stress, and you know what exactly the state of the stress is. That is, it is a stress at a point. So the stress at a point is given to you, and with the help of that information, you need to find out the stresses on any inclined plane. Okay, so you have to identify, because the things would be given to you in the problem. The state of the stress would be given to you, and you will have to identify the stresses on the x faces, the shearing stresses on the x faces, and the normal stresses and the shearing stresses on the y faces, because we are studying the plane stresses only. We are not studying the three-dimensional stresses. So as far as the plane stresses is concerned, we will have 2 faces, x and y faces. So you will have to identify the stress and the stress component on the x and y faces, the shearing stresses and the normal stresses. So before applying any of the equation derived in this topic, let me take the highlighter pointer. You must identify the given stress component, that is sigma x, sigma y and tau xy. So you know what are these. This is the normal stress on the x phase, this is the normal stress on the y phase, and these are the shearing stresses and on the x and y phases. And as for the knowledge of the last lecture is concerned, you know that the shearing stresses on the x and y phases would be equal but opposite in direction. So using the sign convention introduced, the positive stress component act in the positive coordinates. So that's what we introduced in the last lecture, that the positive stress component acts in the positive. So you need to identify the phase. The phase is the positive x phase. If on that positive x phase your shearing stress component is acting towards the positive y phase, and that means that that particular stress would be positive shearing stress. Right, so positive stress component acts in a positive coordinate direction on positive faces of the element. That's what we have explained previously. So you'll have to identify with the help of this rule, you can say, okay, what are the stress component. Then you will have to identify the direction of the stress component, whether they are positive and negative. And then on the next step, you will have to compute the stresses on the inclined plane. With the help of the transformation equation, you will have to find out the stresses on the inclined plane. So the transformation equation that we developed is that the normal stress on the inclined phase, x phase, would be this thing. We have already derived that, so I'm not going into detail of the derivation of this particular equation. And the normal stress on the y dash phase would be this thing, and the shearing stresses on the x dash and the y dash faces would be this thing. So these are the transformation equation that we have already derived. We have discussed that very much in detail. I think I have recorded and uploaded 2 or 3 lectures on these topics. So these transformation equations can be used to compute the stress component sigma x dash, sigma y dash and tau x dash y dash. You know that the notation dash we use for the any of the inclined plane. So remember that the angle theta that defines the inclination is measured from the x-axis to the x-dash axis. So if this is the x-axis and this is the x-dash axis, so this angle would be in the counterclockwise direction. So that's what we
That's the rule that we defined, as you can say, while deriving this stress transformation equation. So the theta between the x, if this is the x and this is the x dash, so this theta would be measured in the counterclockwise direction. And then lastly, you may have to find out the principal stresses as well. So principal stresses sigma 1 and sigma 2 are given by this equation. We have already derived these in the last lecture. So these are the equation for the sigma 1. When you are trying to find out the sigma 1, then you will have to use the plus sign, and if you want to find out the sigma 2, then you will have to use here the minus sign. So one would be the major principal stress, the other would be the minor principal stress. So recall that the shear stress vanishes on the principal plane, the planes on which sigma 1 and sigma 2, we knew that there would be no shearing stresses on the principal plane. And then we have also find out the in plane maximum shearing stresses, and we knew that on that particular plane there would be normal stresses as well. So compute the principal direction. The principal direction can be found from this formula. We know that tangent 2 theta is equal to 2 ta xy, sigma x minus sigma y. The angle theta is measured counterclockwise from the x-axis to a principal axis. So principal direction is simply direction on any inclined plane, and that particular inclined plane is a plane on which the shearing stresses vanishes and the normal stresses are maximum and minimum. So these equations yield two values of theta that differ by 90 degrees. Substituting one of these angles into equation of principal stresses yield the value of either sigma 1 or sigma 2, thereby identifying the principal stress associated with the angle. So these are the 3 or 4 steps, and when I'll explain the example, and then you will practice all the problems, or at least as many problems as you can. Then I think all these steps would be very much crystal clear in your mind, and then you will be able to play with all these transformation equations. So for your understanding, I have included this problem. I have taken this from the gear book that I have already provided to you in the PDF form. So this is the problem number 7.3. I think I'm not very much sure whether this is the problem or the solved example. So anyhow, whatever that is, it is in front of you. So an element in plane stress is subjected to stresses. The normal stress on X phase is 12,300 psi. And the normal stresses on Y phase is 4,200 psi, and the shearing stresses on XY phase is 4,700 psi. And this particular state of the stress is also shown in this particular figure, right? So X and Y axis has been given to you, and you will have to find out stresses on any inclined plane, X dash and Y dash, and you may have to find out the principal stresses as well. So the normal and shearing stresses has been given to you in the descriptive form as well and in the pictorial form as well. So I hope the question is clear to you. Now let's see what we need to find out. We need to determine the principal stresses and show them on a sketch of a properly oriented element. So we have to find out the principal stresses with the help of this given state of the stress, and then you have to find out determine the maximum shear stress and show them on a sketch of a properly oriented element. Consider only the in-plane stresses. Right, so if you have watched my last lectures, I've told you that normally we would be discussing the in-plane shearing system and not be discussing the out-of-plane shearing stresses. So these are the two, I think, only thing that you will have to find out: the principal stresses and the maximum shearing stresses with the help of this given state of the stress. And now you will see that we will follow all these 4 steps that I have already just explained to you. So for finding the principal stress is the principal angle theta that locate the principal planes can be obtained from this equation. Tangent 2 theta is equal to 2 ta xy divided by sigma x minus sigma y. You know that ta xy is equal to minus 4,000 because we know that this is on the positive x phase and the direction of this shearing stress, as you can see, is toward the negative y direction. That's why we will be taking this as a negative 4,700 psi. So that's why we have taken this as to be negative. Right, and as far as the sigma y is concerned, you can see that this particular normal stress is toward the negative y direction, and this would also be a negative. So putting in the values in this equation, you find out the tangent 2 theta is equal to minus 0.5697, and with the help of the calculator you can find out that will have 2 theta, the first theta 2 theta p is equal to 150.3, because this would come here and that would become tangent inverse minus 0.5697. So we'll have 2 values of theta on that would satisfy this particular value of 2 theta. So one would be on 150.3 degree
and when you have to find out the theta, that would be 75.2, and then 2 theta p, the another angle would be 330.3, and when you take half of this, that would be 165.2. और यू कैन से वी नो कि भाई हमारे जो लास्ट नॉलेज है उससे ऑलरेडी नो कि जो एंगल होंगे, जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर होंगे. सो यू कैन जस्ट ऐड 90 इन दिस एंड यू कैन फाइंड आउट द अदर प्रिंसिपल प्लेन एज वेल. So the principal stresses may be obtained by substituting the two value. Now we have to find out the principal stresses. Now you can put these values of theta p, the first value 75.2 and the other value 165.2 into the value of into the principal stresses, sigma x and sigma y. Then you can find out the principal stresses from that equation as well. So now we substitute the first value of 2 theta p into this equation. Because this is the transformation equation, we'll put in the value of 2 theta here as whatever that was, I think 130 point something. Okay, and obtain. Now you are just putting in all the values. Sigma x is 12,300, normal stress in y direction 4,200, again sigma x minus into minus plus, putting in all the values, and we know that 2 theta is 150.3, and solving this minus 5,440 psi. So this is one of the principal stress. This is the principal stress because we are finding this normal stress with the help of the principal plane and the principal direction. When you are putting the value of the principal direction into the transformation equation, that will give you the principal stresses. So in a similar manner, we substitute the second value of 2 theta p and obtain sigma x dash is equal to 13,540 psi. Thus the principal stresses in their corresponding angles are, so for 5,440 psi your theta was 75.2, and for 13,540 psi your theta was 165. So as you can compare these two values of theta, that one normal stress is 5,000 and the other is 13,000. The major would be the major principal stresses and the smaller value would be the minor principal stress. The major principal stress is 13,540 psi, and that particular principal stress is at the principal direction of 165.2, and the other value is 5,440 psi, and that particular principal direction is 75.2. So this is how you can find out the principal stresses in principal direction. There is another way, because in this, so far we have used the transformation equation. We have another equation that from that we can find out the principal stresses directly as well. So in the next step we will try to find out, we will try to use that as well. So now note that theta p1 and theta p2 differ by 90 degree. You can see that the difference between these two is 90 degree, and you can also see that by sigma 1 plus sigma 2 is equal to sigma x plus sigma y. ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसको आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि जो समेशन ऑफ द टू स्ट्रेसेस ऑन एनी प्लेन होगा, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन एनी प्लेन, गिवन प्लेन जो स्टेट ऑफ द स्ट्रेस है, एंड देन जो भी आपको अननोन है उसके ऊपर जब आप मालूम कर लेते हैं तो उस नॉर्मल स्ट्रेसेस का जो समेशन होगा दैट वुड बी इक्वल. द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर शोन ऑन properly oriented element. So this is the minor principal stress which is at the 75.2 degree, and this next would be at the inclination of the 90 degree, and that is 13,540 psi. Okay, so there is an alternative solution for the principal stress as well. The principal stresses may also be calculated from this equation. इसके अंदर आप वैल्यूज डाल दें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की, तो इससे भी आप बड़ी आसानी से डायरेक्टली निकाल सकते हैं. तो पॉजिटिव वैल्यू जो होगी दैट वुड बी, इसके अंदर जब वैल्यूज डालते हैं तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और एक आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. तो मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस इज वेल. सिग्मा 1 वुड बी दिस थिंग एंड सिग्मा 2 वुड बी दिस थिंग. आई थिंक ये माइनस में आ जाएगा, ये जो सिग्मा 2 होगा ये माइनस में होगा, शायद मैं यहाँ लगाना भूल गया हूँ, तो ये आप यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, क्योंकि ये माइनस जो होगा फिर जब आप इसको माइनस साइन के साथ यूज़ कर रहे होंगे तो दैट वुड बी ग्रेटर एंड दिस पर्टिकुलर थिंग वुड बी विद माइनस साइन. ठीक है, तो ये दिस इज आल्सो अनदर इजी मेथड. उससे इसलिए प्रैक्टिस करा दी थी ताकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के ज़रिए से भी प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना आ सके और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का इस्तेमाल भी आपको आ जाए. सो द एंगल थीटा p1 टू द प्लेन ऑन विच सिग्मा 1 x इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस इक्वेशन. ये भी आपको पता होगा, हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसके अंदर ये वैल्यूज़, ये इक्वेशन डिराइव की थी. ठीक है, इसके अंदर से आप निकाल सकते हैं. ठीक है, यहाँ से आप ये निकाल लिया. The only angle between theta and 360 having the specified sine and cosine is 330.3
3 एंड हैंस थीटा 1 इज इक्वल टू 165. तो इससे भी अगर आप निकालना चाहें और इससे भी निकालना चाहें तो दोनों से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको याद होगा जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी उसके अंदर ये कॉस का भी टर्म लिख दी थी, साइन की टर्म, तो किसी भी ट्रिक से आप इस्तेमाल करेंगे तो थीटा आप निकाल सकते हैं। तो दोनों साइन से भी निकालना चाहे कोसाइन से भी निकालना चाहे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही होगी इस पर्टिकुलर वैल्यू को 0.495 साइन की सूरत में एंड 0.869 कोसाइन की सूरत में, ये आप देखेंगे कि द वैल्यू वुड बी 330.3. So this angle is associated with the algebraically larger principal stress, ठीक है, जो कि 13,540 है। इसी तरीके से आप दूसरा भी निकाल सकते हैं जो कि 75.2 है और ये जो होगी स्मॉलर वैल्यू के साथ एसोसिएटेड होगी। सो नोट दैट दीज रिजल्ट फॉर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन प्रिंसिपल डायरेक्शन एग्री विद दोज फाउंड प्रीवियसली। चाहे आप उससे उस मेथड से निकाल लें चाहे आपको इस मेथड से निकाल लें, तो दोनों मेथड से यू विल हैव द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो बहुत इसके क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ अ बिट, वो आप ये कह लेंगे कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये जितना स्ट्रॉन्ग टूल है, इतना पावरफुल टूल है कि विद द हेल्प ऑफ दैट वंस यू स्टार्ट प्लेइंग विद दैट, व्हेन यू स्टार्ट मास्टरिंग दीज इक्वेशन, आप फिर देखेंगे कि आप इससे बहुत कुछ आप बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे आप सवालात को इससे हल कर सकते हैं। अब जो पार्ट 2 था इसका कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी निकालना था, तो मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की जो इक्वेशन थी वो ये थी कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। इसके अंदर आप वैल्यूज़ डाल दें क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये गिवन नॉन है, ठीक है। तो नॉन वैल्यूज़ के अंदर जब आप डालते हैं तो आपको जो टाउ मैक्स मिलता है वो 9400 PSI मिल जाता है। अब इससे एसोसिएटेड प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या होगी, हैविंग द मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस थिंग। वो हमें पता था कि ये जो होते हैं वो 45 डिग्रीज के ऊपर बना रहे होते, तो थीटा P1 के साथ माइनस 45 डिग्री होगा तो 120.2 आ गया, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो 30.2 के ऊपर आ जाएगा, जो आपके पास ऑलरेडी गिवन वैल्यूज़ थी उससे आप निकाल सकते हैं। या फिर आपको पता है कि ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस होते हैं ये भी एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होते हैं, तो आपने जब अगर एक डायरेक्शन निकाल ली 120.2 की तो आप उसमें से 90 माइनस करते हैं तो आपको दूसरी डायरेक्शन में मिल जाती है। तो ये अगर आपने वो जो लेक्चर्स हैं उसको आपने अच्छी तरीके से समझा है, उसमें आपकी कन्फ्यूजन नहीं है, देन फिर ये आपको मजाक लग रहा होगा कि यार ये कितनी आसान चीज़ें हैं। तो अगर वो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आई हैं, वो पिछले लेक्चर की कन्फ्यूजन्स है जो कि आपने नहीं पूछी हैं अभी तक, वो अगर आप नहीं पूछेंगे और कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई हैं तो फिर डेफिनेटली यू विल फाइंड ऑल दोज थिंग्स वेरी डिफिकल्ट। सो माय एडवाइस अगर आप इसको समझना चाहते हैं वो ये है कि गो एंड वॉच दोज लेक्चर इन डिटेल वेरी केयरफुली विद लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड नोट डाउन ऑल योर क्वेरीज और उनसे पूछें। और वो जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आप यहाँ तक पहुँचना आपके लिए बड़ा मुश्किल, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जब वो मोहर सर्कल कर रहे होंगे वो फिर आपको और मज़ीद तंग कर रहा होगा, समझ रहे ना बात को। The normal stresses acting on the plane of the maximum shearing stresses are calculated। अब क्योंकि हमें पता है कि जो मैक्सिमम इन प्लेन मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस है उस पर नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो नहीं होते, लेकिन हमने ये बात पहले बताई थी कि जो मेजर और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं उसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस जीरो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, वो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो 4050 PSI का होगा। ये इक्वेशन हमने सारी पहले से डेवलप कर ली। सो फाइनली दी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस उसने कहा था इसको प्रॉपरली ओरिएंटेड फिगर में भी दिखा दें, तो दिस इज़ दी प्रॉपरली ओरिएंटेड फिगर। ये जो है 9490 PSI जो है इसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस हैं एंड दी नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हैं 4050 PSI होंगे दोनों प्लेन के ऊपर, ठीक है। ये जब आप मोहर सर्कल देखेंगे तो आप मज़ीद आई होप कि आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये यहाँ थोड़ी मैथमेटिकल फॉर्म थी वो ग्राफिकल फॉर्म है उसकी, तो वहाँ आपको ये चीज़ें समझाना और समझाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये पहला इसका जो एसोसिएटेड एंगल था 30.2 था। अब ये जो दोनों प्लेन्स हैं मैक्सिमम जो इन प्लेन शेयरिंग से ये आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री के ऊपर हैं, ठीक है। तो 30.2 में आप 90 डिग्री ऐड कर देते हैं तो आपको दूसरा प्लेन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो इफ़ यू फाइंड आउट द वन प्लेन देन यू कैन फाइंड द अदर प्लेन वेरी इजीली बाय एडिंग द 90 डिग्री, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये एग्जाम्पल किसी न किसी लेवल पे आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि डेफिनेटली आई कैन नॉट, टाइम बड़ा शॉर्ट हो गया है। अब आप इसको मज़ीद जितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है वो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह मोहर सर्कल को। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।